Hello and a very warm welcome, dear viewers. You're watching your favorite channel, and I'm your host and friend, Akhlaq Ahmed, an English teacher from AMU. Well, in today's video, we are going to talk about the method, technique, and format of writing and organizing an article. Now, first of all, let's talk about the format of an article. You see, an article is supposed to be a piece of writing which is meant to be published either in a magazine or a newspaper. Now, if it is supposed to be published in a magazine, then usually what we do is that in the center we write in the beginning, in the first line in the center, we write the title, and then sometimes in the very next line, in the center itself, we write the name of the author. So you can write XYZ. Now, this same item, that is the name of the author, can be written from the extreme left after the title, you know, that is after the title, give the space of a line, and then write the title from the extreme left. That is also okay. Uh, you see, this is usually the pattern in case of a magazine. But usually, in case of a newspaper, what happens is that uh, the same item, the topic comes in the center in the beginning. The name of the writer comes at the end, where you end your article. You may give in the very next line, because in the newspaper, space is important. जब न्यूज़पेपर में हम जो भी कुछ लिखते हैं तो उसमें स्पेस इम्पोर्टेंट होती है, तो वहाँ पे हम लाइन का गैप नहीं देंगे. नेक्स्ट लाइन में हम लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट से नाम लिख देंगे और उसके नीचे डेट लिख देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल 10th of April या April 10, 2022. Now, it is not essential to mention the date in case of magazines. Why? Because usually the magazines mention uh, the month or the edition, on the title cover. उनका जो टाइटल कवर होता है उसी पे लिखा होता है, लाइक द मार्च इशू या April issue. If it's a monthly magazine, then they write March. If it is quarterly, then they would write, for example, January or April, or for example, August, etc. If it is bi-yearly, that is, then of course they mention the month. क्योंकि मैगज़ीन रोज़ तो निकलती नहीं है कोई, तो इसलिए मैगज़ीन में डेट इम्पोर्टेंट नहीं होती, मंथ इम्पोर्टेंट होता है, और वो मंथ पब्लिश्ड होता है डे उसके मैगज़ीन के साथ, यू नो सो उस मंथ को आपको अपने आर्टिकल के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है. जाहिर है कि वॉट एवर आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड in a particular edition, it is supposed that they are written in that month. या अगर पहले के भी लिखे हुए हैं तो वो अपडेटेड होंगे. यानी आप मान लें कि मार्च के इशू में आपका कोई आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, तो उसमें आप जो डिटेल्स वगैरह देंगे वो अब इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए कि आउटडेटेड हो जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसी बात जो अगस्त में हुई हो और अब आउटडेटेड हो गई है, वो आप मार्च वाले इशू में आर्टिकल में मेंशन करें. ऐसा नहीं होगा, आपका वो आर्टिकल फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, जाहिर है. सो हाँ, रेफ़र कर सकते हैं हम उसे इफ़ नेसेसरी. तो अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने 1 मार्च को वो लिखा है आर्टिकल, 20th मार्च को लिखा है या 18th मार्च को लिखा है. सो द डेट इन केस ऑफ मैगज़ीन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मंथ एंड ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, and month and year is
already published with the uh, um, magazine. तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ये तो डेट तो न्यूज़पेपर्स में भी मेंशन होती है, तो हम उसमें क्यों डेट डालते हैं? उसमें हम डेट इसलिए डालते हैं बिकॉज यू नो आर्टिकल्स कैरी अ डेट. ये हो सकता है कि एक आर्टिकल फॉर एग्जांपल 20th अगस्त को लिखा गया, बट दैट इज़ पब्लिश्ड on 27th of August. Why? Because articles are not published every day, they are published weekly. So, you know, अब ये हो सकता है कि आपने 20th अगस्त के अकॉर्डिंग कोई बात मेंशन की हो और इन बिटवीन इन 7 days में उसमें कुछ चेंज आ गया हो, तो इट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस टू राइट द डेट एंड द ईयर. ये in case of newspaper, it usually comes at the end, as I told you. After you finish your article, uh, you write your name and date. In case of exams, obviously in place of name we write ABC or XYZ. Now, you may ask, what we should do if the examiner doesn't specify whether the article is meant to be published in school magazine or in the newspaper. अगर क्वेश्चन ऐसा ही है, फॉर एग्जांपल राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, तो अब तो हमें ये एग्जामिनर ने तो बताया नहीं कि ये कहाँ के लिए है, न्यूज़पेपर के लिए है या मैगज़ीन के लिए है. तो अब आप टॉपिक देख के अंदाज़ा लगाएं. अगर बिल्कुल कोई करंट एकदम इशू ऐसा है, फॉर एग्जांपल a topic like a roadside incident that happened yesterday, तो अब ये एक ऐसा टॉपिक लग रहा है जो कि न्यूज़पेपर वाला टॉपिक है. और कंप्यूटर्स कैन नॉट रिप्लेस टीचर्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैगज़ीन वाला टॉपिक लग रहा है. तो टॉपिक से अंदाज़ा लगा लें. फिर भी इसमें आपको चॉइस है, चाहे तो आप न्यूज़पेपर वाला फॉर्मेट फॉलो कर लें, चाहे मैगज़ीन वाला. बट you should keep in mind that whichever format you follow, you should follow it completely. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मिसाल के तौर पे XYZ तो सेंटर में लिख दिया टाइटल के बाद और डेट लास्ट में लिख रहे हैं. ये गलत हो जाएगा. अगर आपने नेम ऊपर लिख दिया है तो इसका मतलब फिर उसमें डेट होनी नहीं ही चाहिए, और अगर आपने खाली नीचे नेम लिख के छोड़ दिया है तो वो भी गलत है, तब डेट भी होनी चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो जो भी फॉर्मेट फॉलो करें वो पूरी तरह फॉलो करें. अच्छा, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, यू नो, वेदर यू आर राइटिंग फॉर अ मैगजीन और फॉर a newspaper, then the choice is yours. अच्छा, otherwise, you know, um, you may choose any pattern in this case because the examiner has not specified it. अब सवाल ये उठता है कि भाई एक आर्टिकल और एसे में क्या फ़र्क है. You see, an essay is a formal piece of writing, usually technical in nature. There are literary essays, scientific essays, essays related to law, essays on medicine. मतलब different specific fields पे based होते हैं essays, और उनको पढ़ने वाले भी स्पेसिफिक होते हैं. मिसाल के तौर पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कोई ऐसे होगा तो उसको हर आदमी नहीं पढ़ेगा, उसको वो ही पढ़ेगा जो फिज़िक्स का स्टूडेंट है, एंड ही वुड नो द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन फिज़िक्स. इसी तरह से इफ़ देयर इज़ एन एसे ऑन फॉर एग्जांपल 19th century English poetry,
उसको हर कोई नहीं पढ़ेगा, उसको वो पढ़ेगा जिसको लिटरेचर में इंटरेस्ट हो और जो लिटरेरी टर्म्स से वाकिफ हो. फॉर एग्जांपल, one who knows what romanticism is, one who knows what Victorian poetry is all about. तो इसलिए ये ऐसे की लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल होती है. हाँ, पर्सनल एसेज भी होते हैं, पर्सनल एसेज जो इनफॉर्मल होते हैं, मगर उन पर्सनल एसेज में like you may have read that the essay by Mark Twain, I think My Watch or something. That is a kind of a personal essay, uh, in which the author expresses his personal views about some uh, person or thing or something, a place, etc. It may contain humor, it may contain satire, so, but it carries a certain literary effect. तो वो उसमें लैंग्वेज जो है वो इनफॉर्मल हो सकती है, बट यूजुअली द लैंग्वेज ऑफ एसेज एंड द स्टाइल ऑफ एसेज इज फॉर्मल. बट एज अपोज टू दिस, द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल of an article should be informal और सेमी फॉर्मल. इनफॉर्मल इतनी भी ना हो इनफॉर्मल जो बिल्कुल हम अपने फ्रेंड्स के बीच में यूज़ करते हैं. नो, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, बट इट शुड नॉट बी टू टेक्निकल. आप you cannot use technical jargons, technical terms. For example, आपको अगर use करना है, suppose you have to use soliloquy. As students of literature, you would know what soliloquy is. That is a speech delivered by a character in a play, um, which is not supposed to be heard by other characters. Loud thinking, जो character, जो कोई भी एक कैरेक्टर प्ले का जैसे कुछ बैठा हुआ है, सोच रहा है, तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है उन उन्हीं चीज़ों को जो वो सोच रहा होता है. सॉली मीन्स सिंगल, लॉकी मीन्स स्पीच, सिंगल स्पीच. तो इसमें और ड्रामेटिक मोनोलॉग में डिफरेंस होता है. ड्रामेटिक मोनोलॉग इज फॉर्म ऑफ पोइट्री, whereas soliloquy is a dramatic device, is a device used in drama. अब अगर आप कोई ऐसा ऐसे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग एन ऐसे ऑन ड्रामा, और इफ़ यू आर राइटिंग अ रिव्यू ऑन ड्रामा, एन आर्टिकल ऑन ड्रामा, एंड वेयर यू नीड टू यूज़ द वर्ड soliloquy, देन एक्सप्लेन इट. और हाँ, एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत 8-10 लाइन में उसे एक्सप्लेन करें, नहीं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू एक्सप्लेन soliloquy, you can say soliloquy, then put a comma, and after that you can say a device used in drama. That's all. The reader would know what soliloquy is. अब अगर उसे और इंटरेस्ट होगा उसके बारे में जानने का, तो वो he will consult some dictionary and all that. मतलब ये है कि an article is written for general audience, यानी कि जिसको सब कोई पढ़ सके और समझ सकें, चाहे वो उस फील्ड का आदमी हो चाहे ना हो. जैसे मैंने अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एग्जांपल दी. अब हम फोटोसिंथेसिस फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं बॉटनी में. अब ये तो खैर बहुत पॉपुलर टर्म है, यूजुअली लोग जानते हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, बट आप व्हेन यू यूजिंग इट, make sure that you use it in a way that even a person who is not who doesn't have special interest in science will understand it. तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करने हैं तो उन्हें 2-3 वर्ड्स में वहीं एक्सप्लेन कर देना है. तो इस तरह से लैंग्वेज आपकी फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल होनी चाहिए. नाउ after that, you see, it depends on you. Sometimes you may address your readers. For example, you may say dear readers, but it is better if you avoid it. You may use second person, first person, like
Sometimes we say, if you do this, if you do that, then the result would be. The same thing could be said, if we do this and we do that, then the result would be. माने सेम होंगे. अगर हम ये करते हैं, अगर ये करते हैं तो क्या होगा, या अगर इस जुमले को यूं कहा जाए, अगर आप ये करें तो ये रिजल्ट होगा. तो बात तो एक ही हुई ना, हम फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन यूज़ करें. सो इट डजंट रियली मैटर. Like in case of a report, you can't use first and second person. You can only use third person. Article में ऐसा नहीं है. Article में आप कर सकते हैं. The language and the style. So language should be informal and semi-formal, and the style of the article should be straightforward. गोल मोल लच्छेदार लैंग्वेज जो होती है ना, बहुत ज़्यादा मेटाफर्स, सिमिलीज और बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच, वो डेकोरेटिव लैंग्वेज इसको बोलते हैं हम, या फिगरेटिव लैंग्वेज आप कह लीजिए. दिस शुड बी अवॉइडेड. You can write a few humorous sentences or satirical sentences if you like. You can use, for example, sometimes irony or a paradox. But otherwise, please avoid using too many figures of speech. Be straightforward. An article need not be literary in nature. An essay may be literary in nature. An article is a straightforward piece of writing. तो ये कुछ इसके फॉर्मेट और फीचर्स हैं जो हमें जहन में रखने चाहिए. और बाकी इसका कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है. आप इन्हीं को फॉलो करें. नाउ लेट्स कंसिडर 4 aspects which are essential in any piece of writing. याद रखिएगा, चाहे वो आर्टिकल हो, एसे हो, रिपोर्ट हो, स्पीच हो, कोई भी राइटिंग हो, जो फॉर्मल राइटिंग जो होती है, उसमें ये 4 आस्पेक्ट फीचर्स होना ज़रूरी हैं. यानी ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग है, आप समझ लें, जो हर फॉर्म ऑफ राइटिंग पे अप्लाई होते हैं. फीचर नंबर 1 इज यूनिटी. दैट इज you should deal with one and one topic only. Well, that's the call for prayer. So Stop recording video button. Pause video recording button. let's stop for a while. Video resumed. So you see, article writing, then we were discussing unity. Now suppose you are talking, your topic is computers cannot replace teachers. ठीक है? And in this topic you have to prove that computer cannot be a replacement of teachers. And if you begin talking about computers, computer programming, history of computers, तो इसका मतलब आप टॉपिक से हट गए. A few minor digressions, like for example, a computer is a system which works on programmed softwares, whereas human mind is is programmed by, say, let's say the creator. So you could say that the computer cannot have the ability to take an on the spot decision. तो अब इस तरह तो ठीक है, बट लेकिन अगर आप उसकी हिस्ट्री बताने लगे, वाई कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट can be used to store information and to collect knowledge,
तो वो सब तो एक इस तरह के एक आध जुमले तो सही हैं, बट यू कैन नॉट गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। इसी तरह से आप ये तो बता सकते हैं कि व्हाट टीचिंग इज़ अबाउट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ टीचिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, you know, a teacher needs to improvise, needs to adjust to the uh, uh, requirements of the mixed ability class। एक टीचर को क्या करना होता है, पढ़ाते पढ़ाते अगर उसे लगा कि भाई किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा, तो वो अपना स्टाइल, अपना समझाने का तरीका बदल देगा। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कंप्यूटर क्या करेगा, उसको तो जो सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया गया है वो उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा उस वक्त। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड कंप्यूटर। इतना तो आप कह सकते हैं टीचिंग के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में, टीचिंग स्किल्स के बारे में अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो वो यूनिटी आपकी ब्रेक हो जाएगी, आप यू डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, तो दैट विल डैमेज the beauty of the article also, as well as in case of exams you may lose marks। एक तो फीचर ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट फीचर है कोहेरेंस। कोहेरेंस, COHERENCE, कोहेरेंस। तो कोहेरेंस मतलब रिलेटेड टू वन अनदर। अब ये रिलेशन हम दो लेवल्स पे हमें फॉलो करना होगा, one at the level of ideas and the other at the level of language। For example, we are talking about a person and we write a sentence like he is um, he works very hard and he is very punctual, and then all of a sudden we write he lives in B street at Connaught Place। तो ये अजीब सी बात हो गई ना कि हमने उसके बारे में बताया कि वो बहुत पंक्चुअल है, मेहनत करता है और वो वहाँ रहता है, तो इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है आइडियाज़ में। सो इफ़ यू राइट लाइक दिस कि आई मीन इफ़ योर राइटिंग गिव्स द इम्प्रेशन दैट यू हैव पिक्ड अप वन सेंटेंस फ्रॉम हियर एंड वन फ्रॉम देयर एंड पुट देम टुगेदर, तो फिर वो कोहेरेंस नहीं है। वन सेंटेंस, one idea should be connected with the other। हाँ, अब लैंग्वेज के लेवल पे आ जाते हैं। लैंग्वेज में वन sentence should be connected with the other, one paragraph should be connected with the other paragraph। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, how should we do it? We can use interparagraph linkers और लेक्सिकल लिंकर्स। किसी वर्ड को रिपीट करके हम पैराग्राफ कनेक्ट कर सकते हैं, या जो इंटर पैराग्राफ लिंकर्स हैं जैसे बट, नेवरदिलेस, हाउएवर, देयरफॉर, सो फार वी हैव डिस्कस्ड दिस, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस और दैट। इस तरह का स्टार्ट लेके हम पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम कोई एक मान लें कि मिसाल के तौर पे ही वर्क्स हार्ड, ठीक है ना, अब हम मान लें कि फिर अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम कोई इसकी उल्टी बात कहना चाह रहे हैं, तो फिर हमें कोई ऐसा कंजंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए जो ऑपोजिट या कॉन्ट्ररी को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्क्स वेरी हार्ड बट ही इज़ पुअर एट राइटिंग। अब ये दोनों बातें कनेक्टेड हो गई कि मेहनत तो बहुत करता है मगर राइटिंग में वो अच्छा नहीं है। अब ये द आइडियाज़ आर कनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि ये आइडियाज़ कनेक्टेड नहीं है। पढ़ने वाले को पता चल गया कि यहाँ पे कोई राइटिंग का टास्क है जो उसे करना है, मेहनत तो वो उसमें कर रहा है बट ही इज़ नॉट गुड एट इट। तो ये है यूनिटी, कोहेरेंस, ये जिसे कहते हैं कोहेरेंस एट द लेवल ऑफ आइडियाज़ एंड एट द लेवल ऑफ लैंग्वेज। ये हर पीस ऑफ राइटिंग में होनी चाहिए। अच्छा, थर्डली रेलेवेंस। देखिए, यूनिटी और रेलेवेंस में फ़र्क है। यूनिटी मतलब एक टॉपिक में हमें रहना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, यूजुअली समटाइम्स स्टूडेंट्स व्हाट दे डू दैट दे write irrelevant things.
for example, you know, uh, let's take an example. You are writing about the theme of a poem. ठीक है ना? अब आप थीम के बारे में लिख रहे हैं और आपने बताया कि पोएट ने यहाँ पे इस मेटाफर के ज़रिए ये एक्सप्लेन किया है. फॉर एग्जांपल, इन शेक्सपियर सोनेट, एवर फिक्स्ड मार्क shows the permanence of love and it's a metaphor. अब यहाँ तक तो ठीक है. अब आप अगर यहाँ से और कुछ ज़्यादा मेटाफर के बारे में, टेक्निकल डिवाइसेस के बारे में बताना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप थीम से हट के कहीं और चले गए. सो इसी तरह से what happens is that sometimes we write an article and we remember a few quotes. कोई बहुत अच्छे कोटेशंस हमें याद होते हैं तो हमें लगता है कि यार किसी ना किसी तरह हमें इसमें डाल देना चाहिए इस कोटेशन को. नाउ अ कोटेशन, no matter how interesting, how informative it is, if it is not relevant to the topic, it should not be included. Because if you include the irrelevant material, then obviously your focus will be shifted. जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ट्री की फोटो जो है वो लेनी है, उस ट्री के पीछे एक वॉल भी है. अब आपने वॉल ज़्यादा कवर कर ली, ट्री कम कवर किया, तो आपकी फोटोग्राफी क्या हो गई? इररेलेवेंट हो गई. ट्री तो उसमें आया ही नहीं. आपको इररेलेवेंट जब आप उसमें लिख देंगे तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा. ट्री तो आया बट द फोकस has shifted. This will damage the effectiveness of your article. या फिर कोई भी piece of writing हो. And this can also cost you marks. Number 4 is proportion. Proportion, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में तनासुब, या हिंदी में से कहते हैं अनुपात. यानी कि एक एलिमेंट के रिलेशन में दूसरा एलिमेंट यूज़ करना. फॉर एग्जांपल, वी प्रिपेयर अ कप ऑफ टी. अगर हमें एक कप ऑफ टी बनाना है तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक हाफ अ कप ऑफ वाटर एंड हाफ अ कप ऑफ मिल्क. और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं तो 1 स्पून या 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून आप उसमें टी लीव्स डाल देंगे. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू शुगर. इफ यू टेक मोर शुगर देन यू विल यूज 2 teaspoons of sugar. But if you use 10 teaspoons of sugar, then what will happen? एक कप चाय में 10 चमचे शक्कर अगर डाल दी जाए तो क्या बनेगा उसका? That will not be tea, that will become something else. This means that all elements, all aspects of an article should be in a proportion. अच्छा, अब आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे फॉर इंस्टेंस you know what happens is that in an exam we have limited time and limited space. जैसे मैगज़ीन में आपको पब्लिश कराना है अपना आर्टिकल, तो अब ऐसा नहीं है कि आप 55 पेज का आर्टिकल लिख दें तो वो तो मैगज़ीन एक्सेप्ट नहीं करेगी. इसी तरह से न्यूज़पेपर में आपको अगर कोई आर्टिकल पब्लिश करना है तो वहाँ पे आपको पे करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेस. तो अब सवाल ये है कि आपका टॉपिक ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो रेलेवेंट हैं. अब आप क्या करेंगे? अगर आप उन पॉइंट्स को छोड़ते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे आपने इनकम्प्लीट बात करी है. और अगर आप उन्हें लिखते हैं तो फिर वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है. तो अब इसका रूल ये है, इसका प्रिंसिपल ये है कि द एस्पेक्ट्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट
should be given more time and more space, and those aspects which are less important should be briefly summarized. For example, our topic, computers cannot replace teachers. In this, in case of this article, the most important aspect is to show the difference between a human brain and a programmed computer software. No matter how effective or efficient a program is or a software is, but it can never be a substitute of the teacher, because ultimately, you see, uh, a computer software cannot replace human brain, because remember, it is the human brain who devises a software, not a software who devises a human brain. So ये aspect आपको ज़्यादा highlight करना है. अब दूसरे aspects भी हो सकते हैं. For example, computers cannot assess reactions. Teachers जो है वो तो for example, students के faces देख के उसे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इनके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और students को भी teachers की body language देख के अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये teacher कितना serious है इस बारे में, इस point को कितना highlight कर रहा है, our gestures are important. This computer cannot do. तो point तो ये भी relevant है, aspect ये भी relevant है, but it's not as important as the other one. So what I'm trying to suggest is that more important aspects should be given more time and more space. For example, in exams, you are given the space of about 150 words. So you should keep in mind that you should not overshoot the limit. हालांकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, बट होता ये है कि अगर आपने 150 की जगह 300 वर्ड्स लिख दिए तो उससे एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है. अब भले ही आपने बहुत अच्छा लिखा हो, बट होता ये है कि in that case the examiner tends to give you less marks. Examiner, because he has to read unnecessarily, so उसको वो psychologically वो चाहते हुए भी नंबर कम देता है. This is a trick that I tell you, so always stick to the limit. So this is proportion. याद रखिए कि ये 4 points, unity, coherence, relevance or proportion, these are essential features of all kinds of writing. So we should follow these strictly, even in case of articles. Now, we have discussed the format of the article, the style of the article, and important essential features of writing an article. Another important part of writing an article is how to organize it. For the sake of organization, कोई भी piece of writing हो तो उसका एक structure होता है आपके ज़हन में. For example, when you build a house, you have a map of it. आप पहले उसका नक्शा बनवाते हैं कि भाई हमारे पास 100 स्क्वायर फीट जगह है, फॉर एग्जांपल, तो हमें इतना बड़ा कमरा बनाना है, इतना बड़ा हमें ड्राइंग रूम रखना है, इतना डाइनिंग रूम रखना है, इतना किचन रखना है, इतनी उसकी हाइट रखनी है, so we make a map. So in this way we have to make a map of the article in our mind, and that map can have 3 parts. One, introduction, the other, main body, and the third, conclusion. Make sure that when you start writing the article, you should introduce the topic. ऐसे नहीं कहना, आप लिखना नहीं है आपको कि let us introduce the topic. No. For example, computers cannot replace teachers. So you may start by saying that teaching is a dynamic activity. It is not a mechanical process, whereas computer is a mechanical, or rather electronic device. You have introduced the topic.
Then you can go on to say it is impossible for an electronic device to replace a dynamic activity because the electronic devices are usually static. They are not dynamic. Dynamic matlab that which can change according to the situation. Obviously, the computers cannot change according to the situation because they would work only according to the software that has been installed in the computers. So you have introduced the topic now. Make sure that your introduction should not be too long. If it is, if the limit is 150, then maybe 30, 40 words or 25 words, and most part of your article should be the main body. अब आप नेक्स्ट अपनी मेन बॉडी में आ जाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में. You would now start discussing why is it that computers cannot replace teachers. और इसमें आप वही फार्मूला फॉलो करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया कि most important aspects you will differentiate between human brain and the art of teaching and a programmed computer software, and try to prove that the two cannot replace each other. Especially a programmed software cannot replace a human brain or a skilled trained teacher. वो आपको पूरी मेन बॉडी में इसको प्रूव करना है, और इसमें आप फिर जो माइनर पॉइंट्स हैं वो उसको जो लेसर एस्पेक्ट्स हैं, जो लेस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया, फॉर एग्जांपल द टीचर कैन कम्युनिकेट थ्रू हिज बॉडी लैंग्वेज and can understand the students by way of looking at them or listening to them, whereas the computer software perhaps may not be able to do that. ये एक सेंटेंस काफ़ी है इस पे, अब इसमें ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है. इस तरह के पॉइंट्स को आप समराइज कर देंगे एक छोटे से पैराग्राफ में. दिस इज़ हाउ यू विल कंप्लीट द बॉडी. नाउ say in the last about 30 to 35 words जो हैं, या 25 वर्ड्स समझ लें आप. 25 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन आप मान लें और 25 वर्ड्स का आप कंक्लूजन मान लें. 100 वर्ड्स का आपका की मेन बॉडी होनी चाहिए. ये प्रोपोर्शन आपको बनाना पड़ेगा. अब ये है कि थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो सकता है. 25 के 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं. इसी तरह से आपके 100 के 90 या 80 हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि 100 के आप 60 वर्ड की मेन बॉडी कर दें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इतना लंबा कर दें. तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आर्टिकल यू वुड से दैट समथिंग, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, यू मे यूज़ डिफरेंट लैंग्वेज, यू मे यूज़ अ बेटर स्टाइल, बट ऑन द बेसिस ऑफ the discussion that we have had so far, we can safely conclude that computers can never replace teachers. This is your conclusion at the end. लेकिन ये जुमला जो है, it is different. It is a conclusion. It is not a mere statement. क्योंकि आपने कहा on the basis of our discussion. ऊपर आपने कुछ points mention किए हैं, उनके बेस पे आप ये कह रहे हैं. ये एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं दे रहे. ऊपर जो हमारा टॉपिक है, कंप्यूटर कैन नॉट रिप्लेस टीचर्स, इसके पीछे कोई डिस्कशन नहीं है. यही बात आपने कंक्लूजन में कह दी है, बट यू हैव रिलेटेड इट टू द डिस्कशन दैट यू हैव डन इन योर एसे, in your article in the preceding paragraphs. So this is how you have to organize an article. This technique is very useful because when you get a new topic on the spot in an exam, you should have a pattern in mind. आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपको इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस, पहले तो ये सोचिए कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, राइट, और लेस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं. फिर ये सोचें कि आपको इसे इंट्रोड्यूस करना है, और फिर वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखें, और फिर लास्ट में जो आप ये सोच लें कि आपको क्या कंक्लूजन देना है, यानी पॉजिटिव कंक्लूजन देना है या नेगेटिव कंक्लूजन देना है या न्यूट्रल रहना है. इस तरह का आप अपना माइंड पहले से बना लें, फिर उसके बाद आप लिखना शुरू करें.
और जब आप लिखें तो जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, यूनिटी का ध्यान रखें, कोहेरेंस का ध्यान रखें, यानी अपने टॉपिक पे स्टिक रहें, इधर उधर डोंट वैंडर हियर एंड देयर। एक आध माइनर आधा एक सेंटेंस इधर उधर हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ आप मिसाल के तौर पे अगर एग्जांपल्स दे रहे हैं तो एक एग्जांपल काफ़ी है। एक ही तरह की 10 एग्जांपल्स देना, दैट इज़ अ बिट टू मच, यूजलेस। तो और कम से कम शब्दों में, कम इन फ्यूअर वर्ड्स ट्राई टू कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, क्योंकि ये कहा जाता है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। अगर आप कोई बहुत इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली जिसे कहते हैं बात कहना चाहते हैं तो आपको ब्रीफ होना चाहिए, क्योंकि जितनी लंबी चौड़ी बात की जाएगी बात उतनी इनफेक्टिव हो जाएगी एक छोटे से जुमले में। इसीलिए जो प्रोवर्ब्स होते हैं, जैसे easier said than done, कहना आसान है करना मुश्किल, कितने वर्ड्स हैं इसमें, लेकिन ये पूरा इस पे एक आर्टिकल लिखा जा सकता है, तो ये कम वर्ड्स में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। सो यू cover the main body and then of course you come to the conclusion। अब उसमें आपको ये कोहेरेंस का ध्यान रखना है, कंजंक्शंस, प्रॉपर कंजंक्शंस यूज़ करने हैं, प्रॉपर पंक्चुएशंस यूज़ करने हैं। बहुत दफ़ा आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ कर सकते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब ये है कि अपनी बात को फोर्सफुली कहने के लिए कि आपका मतलब सवाल पूछना नहीं है बल्कि फोर्सफुली अपनी बात कहना है। मतलब इज़ इट रियली ट्रू, क्या वाकई ये सच है? मतलब रीडर समझ रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सच नहीं है। सो यू कैन यूज़ रिटोरिकल क्वेश्चंस, you can use exclamation marks. Similarly, if you remember a very relevant and good quotation, you can quote also, but please do not quote long sentences। अगर आपको किसी का कुछ कोट भी करना है तो उसके वही स्पेसिफिक वर्ड्स कोट करिए जो वहाँ पे रिलेवेंट हैं। जैसे अगर हम उर्दू में कोई आर्टिकल लिखते हैं तो बाज़ लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई इसमें जितने शेर शामिल कर सकें उतना अच्छा है। अब वो पूरे पूरे अशार जो हैं वो लिखना जो है वो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस। उससे ब्यूटी नहीं बढ़ती बल्कि ब्यूटी डैमेज होती है। उन अशार में से या उन पोइटिक लाइंस में से आप वो वर्ड्स ले लीजिए विच द वर्ड्स विच आर इम्पोर्टेंट। जैसे गालिब ने कहा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो आप अगर सिर्फ इतना कह देते हैं कि भाई जन्नत की हकीकत तो हम सबको मालूम ही है, तो you have referred indirectly to that couplet and your purpose is served. So what I mean to say is that if you want to quote sparingly, बहुत कम कोट करें। लंबे कोटेशंस कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होते, छोटे छोटे कोटेशंस होने चाहिए, 2-2 4-4 वर्ड्स के, वही वर्ड जो रेलेवेंट हो। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में क्या होता है, यानी आर्टिकल्स वगैरह जो पब्लिश होते हैं मैगजीन्स वगैरह में, उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई पूरा एक जुमला बोला है तो वो पूरा का पूरा जुमला कोट नहीं करते बल्कि उसके कुछ की वर्ड्स जो हैं वो कोट कर देते हैं, बाकी अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो you can use quotations also, but as I have said, please avoid using technical language. If it is essential to use a technical term, explain it in a few words, and don't use decorative language too much. Don't use figures of speech too much. बहुत ज़्यादा लच्छेदार घुमा फिरा के बात करना, that is not say required in case of an article. So keep these points in mind, and this is nearly all about article writing. If you follow all these suggestions, then I'm sure you would be able to write a very good article. But remember, writing needs a lot of practice.
So before you go to your exams, try writing 2 or 3 articles so that you have got a habit of writing. Because if you're not in the habit of writing, then you might find it challenging in the exams. Whatever forms of writing are there, like letters or reporting or speech, etc., uh, you should write a few of them before the exams. प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, अपनी तरफ से टॉपिक सोच के लिख लीजिए. कोई वो चेक नहीं होना, बट आप खुद चेक करके उसे देख सकते हैं कि आपने कितना अच्छा लिखा है, कितना नहीं लिखा. So your mind will start working and you will be in the habit of writing. वो आदत आपकी बन जाएगी. For example, uh, if you walk, if you if you do jogging, if you walk and walk with quick steps every day, अगर आप चलते रहें, रोज़ चलते रहें और 2 दिन ना भी चलें, आपको तीसरे दिन चलना हो तो आप चल लेंगे. But if you don't walk at all and if you have to run, then you would not be able to do it. Similarly, if you want to write a good piece of writing, then you should be in the habit of writing. Writing needs a lot of practice. So whatever time you have now, uh, whatever time is left for your exams now, you know, um, make sure that you use it. You use some of that time. I mean, give some of that time to writing practice. So this is my humble suggestion to you. So this is nearly all about writing an article. So let's stop here. Hopefully, we would meet again with another interesting topic. So, till then, take care and cheerio. Stop recording video button.